नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं अवॉइडिंग डी एंड ई टाइप माइक्रोस्ट्रक्चर इन रिकास्टाइन। कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो कस्टमर हमें आके बताता है कि आपका जो सैंपल है उसका जो माइक्रोस्ट्रक्चर है उसमें डी और ई टाइप के माइक्रोस्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल है। उसके वजह से आपका सैंपल कई बार रिजेक्ट भी होता है, कई बार आपको रीसैम्पलिंग करना पड़ता है। And at that time, a question arises how to overcome this D and E type microstructure और किस तरह से हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से हमारा जो एक्सपेक्टेड माइक्रोस्ट्रक्चर होता है ए टाइप प्रिडोमिनेंट 85% मिनिमम, तो उसे अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब कुछ हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस गो एंड सी दिस वीडियो। So this is actually a case study which I have been जो मैंने एक्सपीरियंस की है during my one of my visit to the one of the foundry as a consultant and उस दौरान मैंने इस केस स्टडी को नज़दीक से देखा था, उसे रिजॉल्व करने में मेरा योगदान था। तो कहीं ना कहीं जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि क्यों ना ये केस स्टडी मैं भी यूट्यूब पे डालूं ताकि लोगों को इस बारे में पता चले और दे कैन यूज इट एज ए गाइडलाइन फॉर देयर ओन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। तो इसलिए मैंने इस केस स्टडी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचा और आज आपके सामने उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो सबसे पहले तो वहाँ पे एक सैंपल जो एक ओईएम ने रिजेक्ट किया था बिकॉज ऑफ डी एंड ई टाइप ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर एंड दे वांट मिनिमम 85 to 90% A type and they don't want any D or E type structure in the micro। जब मैंने इनिशियल उनका जो सैंपल का माइक्रो स्ट्रक्चर देखा तो इट वाज ऑलमोस्ट 100% डी एंड ई टाइप था। उसमें काफी एबनॉर्मलिटीज थी और मुझे लगा कि शायद कस्टमर बिल्कुल सही है, ये कास्टिंग का माइक्रो स्ट्रक्चर से वो कास्टिंग एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट प्रोसेस और देन उसकी सारी कुंडली हमने निकाली, क्या उन्होंने प्रोसेस फॉलो की थी, उनकी प्रोसेस उस वक्त क्या चल रही थी, उसको हमने एक पेपर पे लिया था जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रहा हूँ। एम एस क्रैप वहाँ पे 15% वो इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग वॉज अराउंड 30 to 35%। तो एम एस क्रैप 15% वॉज एक्सेप्टेबल, नो इशू विद दैट। बोरिंग 30 to 35% वॉज लिटिल हायर बिकॉज as we all know the boring reduces the nucleation of a metal। so वहाँ पे एक चांस था कि आपका जो चिलिंग इफेक्ट है वो बढ़ेगा और उसके वजह से कहीं ना कहीं चिलिंग इफेक्ट के वजह से आपका डी और ई टाइप प्रमोट होगा। तो वो एक ऑप्शन मेरे सामने दिखाई दे रहा था। देन पिगैन वाज ओनली 5% व्हिच वाज अगेन रिड्यूसिंग द न्यूक्लिएशन लेवल। तो न्यूक्लिएशन वहाँ पे काफी कम जा रहा था, जो वर्जिन मटेरियल है वो कम जा रहा था। तो दैट वाज अनदर थिंग। then runner and riser was also 45 to 50% only। तो वो भी एक चीज थी जो बिल्कुल मेरे सामने थी कि 40 to 55% of return riser was okay। there was no issue in that as well, but carbon was on lower side, it was 3.25% which was on lower side, silicon 1.8 was on borderline, but I think it was little bit on lower side, we have to little bit increase that as well। Manganese 0.75 was okay. Chromium was 0.18%, which is also on higher side. So it promotes the chilling effect and promotes the D and E type graphite. So chromium was also another concern. Copper was zero point 0.2, what was perfectly all right for giving good machinability, good light structure, and desired hardness and physical properties. Inoculation 0.2% cerium base was they are using. It was good inoculation. Cerium base was definitely a good inoculation, but they are using in one stage only. So that was another concern. Then what we have analyzed is carbon equivalent. Carbon equivalent is carbon plus silicon, one third of silicon. So it comes around 3.25 plus 1.8 divided by 3 is around 3.85। so what we thought that it should be around 4 to 4.3%, carbon equivalent should be between 4 to 4.3 or 4.2। so 3.85 was on lower side, so it can promote under cooling and D and E type graphite। so what we have decided
is to increase the carbon equivalent that was been decided. So what action we have taken is we have raised the carbon equivalent from 3.85 to 4%, silicon 1.8 to 2%, chromium 0.18 to 15.15%. Boring was reduced to 25% from 35%. Pigan increases from 5% to 15%. Inoculation 0.25 we have reduced it to 0.15 at the first stage and 0.05 as the second stage, that is the steam inoculation phase. Pouring temperature we have not touched that. 1350 1370 was kept as it is. And then this is the microstructure we have achieved. The earlier microstructure you can see D and E type microstructure. As I been always saying that D and E type microstructure is dangerous because it is giving you some trend. So the cracking tendency increases. You can have leakages because of that. Your physical properties also get down little bit. So, but as we move from D to D and E type to A type, it is a you can say flakes are been randomly distributed, properly distributed in all over. So there is no proper you can say trend towards cracking. So it gives you good perlite structure, good tensile strength, good hardness, and good physical properties which can be used for a good casting. So मैं हमने जो इसके बाद जो माइक्रोस्ट्रक्चर देखा था दैट वाज ए टाइप माइक्रोस्ट्रक्चर यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन कि किस तरह से हमने डी और ई से ए टाइप में कन्वर्ट किया द समरी एंड एक्शन प्लान व्हाट यू वी हैव यूज्ड इज रेज we are increased the carbon equivalent and silicon. Then we have lowered the chromium and boring percentage. We have increased the pigan percentage. It has been missed out here, but we can increase the pigan percentage, and double inoculation strategy been used and ensure consistent pouring practices. So all these factors have helped us to convert D and E type microstructure into A type microstructure, and this is a good lesson for me and for all of you that how we can overcome this D and E type microstructure and get a good quality of A type microstructure. You have to reduce your boring, you have to reduce the chromium percentage, you have to increase carbon equivalent, you have to increase carbon percentage and silicon percentage to certain extent, and increase the pigan as well, and double stage inoculation will help you to get better microstructure, better you can say A-type microstructure. Maybe we'll get some B and C along with that, but it will definitely not get any D and E type in that microstructure. So it has been accepted by the customer, and hope this video will help you as well to improve your microstructure as well. So thank you very much for patient hearing. Thank you once again.